That we have for you this afternoon is the response that finally has come from UP Chief Minister Yogi Adityanath. Now, UP Chief Minister Yogi Adityanath has responded to Congress Chief Mallikarjun Kharge over his remarks against him. Speaking at an event, he said that the Congress chief has been very angry with him for the past 3 days. He said for Kharge, it's the Congress party that comes first. But for him, that is Yogi Adityanath and Prime Minister Narendra Modi, it is the nation that comes first. He went on to add that Kharge's village was actually under the Nizam of Hyderabad and it was burnt. But Kharge does not say anything about the Muslim League because he's scared of losing the Muslim vote. 3 दिन से कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात को देख करके वे मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। वे नाम पीड़े बनने जा रहे हैं मुझ पर कि मैं इस प्रकार की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूं। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है। यही अंतर है एक योगी में और आप में कि मेरे लिए देश पहले है, क्योंकि मेरे नेता मोदी जी ने हमें यही बताया है कि पहले हर काम देश के नाम। लेकिन आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है और यही कारण है कि आप सच्चाई न बोल पा रहे हैं न समझ पा रहे हैं। Let's now listen in to what Congress President Mallikarjun Kharge had said earlier. मैं कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है, बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। Let's now go across to my colleague Adib joining us on the broadcast. More on this. Adib, finally the response has come from UP Chief Minister Yogi Adityanath, because we have been seeing almost on a daily basis that how Mallikarjun Kharge, the Congress president, has been attacking specifically UP Chief Minister Yogi Adityanath. And before I get you that response from Adib, let's once again listen in to what exactly UP Chief Minister Yogi Adityanath has said. निजाम के रजाकारों के द्वारा उन्हें जलाया गया। खड़गे जी सच्चाई को नहीं बोलना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि निजाम पे आरोप लगाऊंगा तो मुस्लिम वोट खिसक जाएगा। अब आप सोचो, इतिहास को भी अब कांग्रेस झुठलाने का काम कर रही है, इतिहास को भी झुठलाने का काम कर रही है। जिस निजाम के रजाकारों ने निर्ममता के साथ हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद रियासत के अंदर गांव के गांव चलाए गए थे, उस सच्चाई को खड़गे जी आज स्वीकार नहीं करना चाहते। वोट बैंक की खातिर अपने परिवार के बलिदान को भूल गए हैं। इनके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में कहता हूं, ये निजाम का दुस्साहस इसलिए हुआ था, ये जूनागढ़ का नवाब इसलिए हैकड़ी दिखा रहा था। लोकसभा चुनाव में आपकी इस लोकसभा क्षेत्र में जो तांडव हो रहा था इसलिए हो रहा था क्योंकि आप बटे थे। Let's now go across to my colleague Adib joining us on the broadcast. More on this. Adib, now, you know, it all started, in fact, with the first statement by UP Chief Minister Yogi Adityanath when he gave this call for unity, when he said, batoge to katoge. And now also, while responding to Mr. Mallikarjun Kharge, in the end,
he had exactly the same message to say, but simultaneously saying that for the Congress party, for Mr. Mallikarjun Kharge, it's Congress first. For UP Chief Minister, it is the nation first, just like for the Prime Minister. Well, definitely, Hina, see, Chief Minister Yogi Adityanath gave the statement of patenge to cutenge, and after his statement, he was subjected to different kind of attacks from all the political parties, including Congress Party and Samajwadi Party. In fact, Samajwadi Party also supported the statement which Mallikarjun Kharge made against Chief Minister Yogi Adityanath from the past 3 days. Samajwadi Party was supporting the statement given by him, and today Chief Minister Yogi Adityanath has responded to what Mallikarjun Kharge said. Chief Minister Yogi Adityanath said that seems like Mallikarjun Kharge, the Congress president, is not happy with me for the past 3 days, and he has been criticizing me. But the Chief Minister Yogi went on to say that for me, the nation comes first as for the Prime Minister, but for Mallikarjun Kharge, it is the appeasement of Congress that comes first. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath also attacked Mallikarjun Kharge, saying that his village was under the regime of Nizam and his village was burned by the Muslim League, and Kharge cannot say a word against Muslim League because he is afraid of losing Muslim vote bank. So he is attacking me instead of talking about the Muslim League, what Muslim League did with his family and in his village. This is how Chief Minister Yogi Adityanath has responded to Mallikarjun Kharge and all the attacks that the Congress party had been attacking on him for the past few days, and especially the past 3 days when Mallikarjun Kharge became very vocal and started attacking Chief Minister Yogi Adityanath. First he used the word Gerua, then he used the word terror for Chief Minister Yogi Adityanath, and now Chief Minister Yogi Adityanath, while he was campaigning in Maharashtra for BJP, he has responded back to all the statements or to all the attacks that Mallikarjun Kharge started against Chief Minister Yogi Adityanath. Right, but you know, Adib, it's also interesting to see how from the Congress party, it is Mallikarjun Kharge who is, making these kind of statements, who is attacking the UP Chief Minister Yogi Adityanath. Stay on with us, Adib. We have Pramod Tiwari of the Congress party also now joining us on the broadcast. Mr. Pramod Tiwari, good afternoon. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. Firstly, your response to the reaction that we have got from UP Chief Minister Yogi Adityanath to what Mr. Mallikarjun Kharge has been saying about him in the last few days. Mr. Yogi Adityanath making it very clear, for him nation comes first. For Mr. Kharge, it's the Congress party that comes first. मैं योगी जी को सादर ये कहना चाहता हूं कि 50 साल से इलेक्टेड पॉलिटिक्स में खरगे साहब पूरी तरह जनता को समर्पित, देश को समर्पित, विचारों को समर्पित पार्टी में है। उन्होंने राष्ट्र की सेवा की, तभी कांग्रेस के सर्वोच्च पद राष्ट्रीय अध्यक्ष पे बैठे हैं और वो राज्यसभा में नेता विरोधी दल है। मैं उनके साथ उपनेता हूं, मैंने उन्हें नजदीक से काम करते देखा है। अब भारतीय जनता पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नेता विरोधी दल एक दलित समुदाय से आने वाला आदमी कैसे बन सकता है। इसी की सारी प्रतिक्रिया है। जहां तक मुख्यमंत्री जी योगी जी की बात कर रहा हूं, उनसे सिर्फ इतना कहना है, प्रमोद तिवारी जी जी भैया तो आप सवाल पूछ लें या फिर जवाब नहीं देने देंगे तो नहीं, मुझे लगा आपका जवाब खत्म हो गया था, इसीलिए मैं दूसरे सवाल पर आई, बट आप प्लीज अपना जवाब खत्म कीजिए। पूरा कर लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं योगी महात्मा और उनसे कहना चाहता हूं, जब आप राजा बनेंगे, राजगुरु बनेंगे तो कोई सवाल नहीं, राजा बनेंगे तो आपके कार्य पे, आपके कहीं लैप्स पे सवाल उठेंगे और यही खरगे साहब और कांग्रेस करती। अब आप पूछें। जी, दूसरी एक बात जो योगी आदित्यनाथ यूपी चीफ मिनिस्टर ने कही है, वो ये भी कही है कि वो अगर हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो उनका खुद का जो विलेज था वो निजाम ऑफ हैदराबाद के अंडर था और जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान पहुंचा था उनके गांव को, खास करके मुस्लिम लीग की तरफ से। और आज वो मुस्लिम लीग के खिलाफ इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर है, अगर वो कहेंगे तो जो एक मुस्लिम कम्युनिटी के वोट्स हैं कांग्रेस पार्टी को जो हमेशा मिलते हैं वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? खरगे साहब
जो कुछ घटना उनके परिवार के साथ घटित हुई वो किताब में भी लिखा गया है। उन पर जो किताब लिखी गई उसमें है। तो ये तो जानकारी होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि वो कोई चीज छिपाते नहीं, लिखी भी गई है, मैंने पढ़ी है। दूसरी बात बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग उस समय उसमें जो सरकार में शामिल थी उसमें जो इनके सर्वोच्च नेता हैं योगी जी के, भारतीय जनता पार्टी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मंत्री थे। तो योगी जी की पार्टी और मुस्लिम लीग तो दोनों तीन प्रांतों में उत्तर बंगाल भी शामिल है, मंत्रिमंडल में साथ रहे हों और इस तरह की बात करें तो वो यही कह सकता हूं कि इतिहास के पूरे तथ्य उन्हें नहीं मालूम। जी प्रमोद तिवारी जी, एक और सवाल है। जिस तरह से बयान आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, आप किस तरह से देखते हैं उन्हें? क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि कुछ ऐसे नेता हैं जो साधु की तरह बन के रहते हैं और अब पॉलिटिशियंस बन गए हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो उन्हें सफेद कपड़े पहनने चाहिए और अगर सन्यासी हैं तो गेरुआ रंग के कपड़े जो हैं वो पहनते हैं। तो आपको लगता है कि ये बयान सही है एक वरिष्ठ नेता की तरफ से? क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन किसी को भी हक है किसी भी रंग के कपड़े पहन सकता है, उस पर क्या आपत्ति होनी चाहिए? और दूसरी तरफ उन्होंने उनको एक टेररिस्ट की तरह बात करते हुए बोला। किसी को कोई आपत्ति नहीं, कौन क्या कपड़े पहने, क्या खाए, क्या करे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। पर एक चीज कहना चाहूंगा कि जब कोई राजा बन जाता है, जैसे मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, एक राजा की तरह रहेगा, तो फिर उसे तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए। जो लैप्सेज होंगे गवर्नमेंट में उसके लिए जवाबदेही उसकी होगी। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं सन्यासी हूं इसलिए मैं क्यों जवाब दूं, मैंने ये कपड़े उनकी तरफ से मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या कहने का मतलब है खड़गे साहब का। आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अगर आपको टारगेट करना है, आप जैसे कह रहे हैं कि अगर कोई राजा बन जाता है तो उसको इस तरह के अटैक्स के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा सवाल यही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट आ रहा है कि अगर आपको अटैक करना है एक नेता को तो उसकी नीतियों को लेकर कीजिए, जो यूपी में पॉलिसीज है उनको लेकर कीजिए, वो क्या कपड़े पहनते हैं, किस तरह से बात करते हैं, उनको एक आतंकवादी से कंपेयर करना, क्या ये शोभा देता है एक वरिष्ठ नेता को जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इस वक्त और जिस पद पर वो बैठे हैं? मैं फिर आपसे कह दूं, खड़गे साहब ने बहुत सोच कि सत्ता के शीर्ष पे होगा तो जो कमजोरियां होंगी वो पक्ष जाहिर करेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। आप किसी कपड़े की ऑल राइट कर रहे हैं उनके। All right. Mr. Pramod Tiwari, thank you very much for speaking with us here on Times Now and sharing with us your perspective on the comments that we have heard from Mr. Mallikarjun Kharge. So he believes that there's nothing wrong in what Mr. Mallikarjun Kharge has said. But let's go back to my colleague Adib, who continues to be with us at this point in time. Adib, what we can say that the way the political discourse has been hitting a new low almost on a daily basis, the way there is appeasement, politics of appeasement that's continuously happening, be it ahead of the by-polls in UP, Karnataka, Kerala, or the elections in Jharkhand and Maharashtra, it clearly shows that there is a lot at stake for all the political parties here, isn't it? Well, definitely, Hina, see, it's a prestige battle not just for BJP but for other parties also. Especially if we talk about the Uttar Pradesh, BJP did not perform very well in the state of Uttar Pradesh, and these by-polls are a prestige battle for the BJP as well as for the Samajwadi Party and the India Bloc. For Samajwadi Party and India Bloc, they want to maintain that momentum that they have received in the Lok Sabha polls. But for the BJP, they want to change the narrative that the people of Uttar Pradesh, they are with BJP, and BJP has been working on the path of development. So this is the kind of narrative that BJP wants to take forward. And speaking of Mallikarjun Kharge, what Mallikarjun Kharge said about Chief Minister Yogi Adityanath, BJP believes that the call for unity of Hindu voters, the consolidation of Hindu voters of what Chief Minister Yogi Adityanath has said is working on ground, and this is what has spooked Congress, and that's why Congress is giving such a sharp response, and that too from a very senior leader such as Mallikarjun Kharge. So this is what BJP believes, that the unity call
call which was given by Chief Minister Yogi Adityanath is working not just in Uttar Pradesh but throughout the country. We saw how the posters of Chief Minister Yogi Adityanath was placed in different parts of Mumbai of Batenge to Katenge. Adeep, I'm just requesting you to stay on with us. We have Siddharthnath Singh of the BJP joining us on the broadcast as well. Mr. Siddharthnath Singh, good afternoon. Thank you very much for speaking with us here on Times Now. What do you have to say about the kind of attacks we have seen coming in from Mr. Mallikarjun Kharge, the Congress President, especially for UP Chief Minister Yogi Adityanath? You know, this kind of attack which has come from Mr. Kharge, calling, demeaning the saffron clothing and the sadhus and sons of this country, it seems they have some kind of a hatred towards the Hindus or anybody who is a sannyasi. And then labeling them as terrorists is something very demeaning. And I wish the Congress takes a note and Sonia Gandhi and Rahul Gandhi makes an apology about it. And but nevertheless, it seems that they are unable to understand that the slogan given by Yogi ji and also by the Prime Minister is for the united India or united Hindus. So they must take in that spirit rather than being so disturbed that their vote bank, by dividing the Hindus, is getting nowhere for them. So therefore they are very disturbed. But nevertheless, using that kind of word coming from the Congress President is certainly unacceptable, and they should extend an apology. Okay, you're saying that the comments are unacceptable. The top leadership should, at least apologize for what Mallikarjun Kharge, the Congress President, has been saying about UP Chief Minister Yogi Adityanath. Mr. Siddharthnath Singh, we have been speaking to several Congress leaders, and before I spoke with you, I had a conversation with Mr. Pramod Tiwari as well of the Congress Party. So, the sense that we are getting is that Mr. Yogi Adityanath, the UP Chief Minister, should be prepared for these kind of attacks. They believe that there's nothing wrong in what Mr. Mallikarjun Kharge has said. If he represents a particular position, he is the Chief Minister of Uttar Pradesh, then he should be prepared to, addressing these kind of statements. With all due respect to Mr. Pramod Tiwari ji, let's understand what has Yogi ji said. Yogi ji has said that the Hindus should not get divided. Unki ekta will help them. Nobody is going to divide them. And nobody is going to take advantage or over their unity. So that's what Yogi ji has said. And therefore, it is nothing, we are not defensive about it, but it's a fact. We have seen this country being divided before 1947 and post 1947 based on the religion. If the country had remained united,